Hi guys, welcome to Citizen Mentors. My name is Ketan. This is a new series that I'm starting from today, which is called as Bschool Review Series. What I'm going to do in this series is basically हम Bschools को analyze करने वाले हैं. जितने भी tier 1, tier 2, tier 3 के जो Bschools है, I will be analyzing them, and we're going to do the in-depth analysis about the colleges, right from the location से लेके corporates and the placements, all that stuff. So welcome to the new series. I will also be doing the comparative analysis because most of the time हमें कॉलेज को देख के पता चलता है कि हाँ यार ये कॉलेज तो अच्छा लग रहा है, बट उसका कंपैरिजन किसी और कॉलेज के साथ होना बहुत ज़रूरी है, so that students can take a कैलकुलेटिव डिसीजन कि हाँ यार चलो ठीक है ये कॉलेज तो अच्छा लग रहा है, बट अगर मैं इस कॉलेज को इस कॉलेज के साथ कंपेयर करूँ जो सेम टियर में आते हैं या फिर सेम कैटेगरी में आते हैं, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट प्लेसमेंट का एनालिसिस करेंगे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जब हम एक बी स्कूल के बारे में बात करते हैं 1, 2, 3, 4 साल का पर्सपेक्टिव नहीं लिया जा सकता मेरे भाई. We have to take into consideration round about next 8 to 10 years because that's where the careers are getting built, right? And we'll talk about कि specialization कौन सा अच्छा है and all that stuff. Now again, जब मैं रिव्यू में करूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन कॉलेज के वेबसाइट पे दी गई है, जो उनके प्रोस्पेक्टस पे दी गई है, that is going to be the base of the information that I'm going to use for making the video. Along with that, my personal experiences from my students, those who are studying in these B schools. So I am going to add on that and a couple of things as far as my experience is concerned. So welcome to this series, guys. You can subscribe to my channel because you will be seeing a lot of videos coming up like this. Now, to begin with, the first college that I have taken today is SIMS, Symbiosis Institute of Management Studies. Why this B school particularly? Because Snap is around the corner and मुझे बहुत सारे queries आए थे SIMS के ऊपर. So I'm starting with SIMS and we will be doing all Symbiosis colleges, IFT, GYM, TAPME, all these colleges you will be getting at least one video on a daily basis. Now, let's understand about this college. इसका फीस अगर बात करेंगे 15 से 20 लाख के बीच में होना चाहिए. मैं फीस के बारे में बात नहीं करूंगा. आपको पता है कि मेरा ROI is something that I am really not keen on or talking about. तो यार वो थोड़ा सा आप देख लेना दैट ROI वगैरह आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट बिकॉज वो बड़ा सब्जेक्टिव है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉलेज. सो दिस इज बेसिकली पुणे बेस्ड कॉलेज. दिस इज नोन फॉर हैविंग 80% रिजर्वेशन फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड, जिनके रिलेटिव्स है, मॉम डैड अगर डिफेंस में है तो उनके लिए ये है. सो लेट्स अंडरस्टैंड ये कॉलेज आपको करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. सो टू स्टार्ट विथ, राइट, couple of things that I liked about this colleges is the first thing is that live projects. Now guys, पहली बात ये है कि live projects की भी important है. बहुत सारे colleges ऐसे हैं इंडिया में जो maximum fees वगैरह चार्ज करते हैं, summers भी देते हैं, final placement भी देते हैं, but there is something called as live projects और there is something called as concurrent projects. ये चीज़ बहुत अच्छी होती है और एक चीज़ add on होती है. You should always look out for a colleges those are giving you live projects, right? Summer placement तो हर कोई देगा, final भी हर कोई देगा, but live projects are quite important. So the first thing that I'm going to talk about is the live projects, and that's a good thing that college like SIMS is giving you live project ka platform. You can talk about the companies, right? So companies offered live projects, Money Visits, Travel Google, Urban Campus, Shiksha.com, Bajaj, Thermax, Sulekha. All these are decent companies, those who are coming on the campus for live projects. Live projects करोगे तो आपको फायदा होगा definitely. आगे चलेंगे वैल्यू एडेड कोर्सेज. ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी जहाँ पे SIMS के is concerned. A lot of colleges are not giving these kind of facilities. The first thing, 6 Sigma Green Belt. अभी जो 6 Sigma Green Belt है, अगर आपको पता होगा, SIOM करके कॉलेज है, Symbiosis Institute of Operations Management. तो SIOM इसको ऑफर करता है. It's a very good thing. Then you have something called as Bloomberg. हाँ, तो Bloomberg learn करना कैंपस पे is itself a good thing. I remember, मेरे ख्याल से मैंने इनके वेबसाइट पे कहीं पे तो देखा है, they have a Bloomberg kind of a facility available on the campus जहाँ पे you can actually learn the entire Bloomberg system, right? So they have got a Bloomberg lab, which is a good thing. Then again they have this tie-up with KPMG and all that. तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है, the college is little different, they're trying to do something for the students as well. Now I have taken a snapshot of 1820 batch. This is what I could get it, available था, but कुछ ज़्यादा changes होते नहीं हैं. मोरल चीज़ें सेम ही होती है. इक्का दुक्का परसेंटेज चेंज हो गया ऊपर नीचे, तो बाकी ज़्यादा कुछ होता नहीं है. मार्केटिंग 139 students are there. That's what they're saying, that the size. You can have a look at this. Now importantly अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे freshers की संख्या ज़्यादा है. Quite a lot of freshers out here. So पहली बात, if you are a fresher, you can go for it.
आई थिंक इनका बैच स्ट्रेंथ कुछ 300 होना चाहिए. आई वाज राइट. सो बैच स्ट्रेंथ इज राउंड अबाउट 306. आउट ऑफ दैट यू हैव राउंड अबाउट 157 बच्चा लोग, दोज आर फ्रेशर, मतलब 50% बच्चा लोग आर फ्रेशर, विच इज गुड. ना अगर हम बात करेंगे 1 से लेके 2 साल तक का वर्क एक्स वाले बच्चे, तो मेरे ख्याल से वो लोग भी हैं यहाँ पे. अगर आप देखोगे 53 है. 2 से 3 वाले भी अच्छे खासे हैं. 3 से 4 वाला अगर आपका वर्क एक्स है, इफ यू हैव अ वर्क एक्स ऑफ 3 to 4 years or 4+, I will not recommend this college to you. Definitely, to be very honest, I will not be recommending this college for anybody who's got an experience more than 2 years. You can pick it up on your own risk, by the way. आगे चलेंगे. इंजीनियर से भरे हैं यहाँ ये कॉलेज भी, बहुत ज्यादा इंजीनियर्स हैं यहाँ पे. बट अच्छी बात है कि यार यहाँ पे बीकॉम के भी नंबर्स अच्छे खासे हैं, राइट. अगर मैं बीकॉम के नंबर्स देखूँ, that's round about 15 to 18%. So I think it's good for BCom also. चलो फाइनेंस के बारे में बात करेंगे. मेरे ख्याल से यहाँ पे फाइनेंस के बारे में उन्होंने बात करी है. We can, you want to go one by one? I don't think I'll go one by one. Let's get the important things. Okay. करिकुलम की अगर बारे में बात करेंगे, okay. करिकुलम मोर ओवर मुझे सेम ही लग रहा है, ये कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगी. नॉलेज मैनेजमेंट इज समथिंग आई फील इट्स अ गुड थिंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है. डायरेक्ट टैक्सेशन, आई थिंक द सब्जेक्ट्स आर गुड. रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है. सब्जेक्ट्स आर कॉमन, कुछ बड़ी तोफ चीज नहीं है. समर इंटर्नशिप, बजाज फिनसर्व, एयरटेल, क्रेडिट स्विस, दारा शॉ, दीज आर किलर कंपनीज. अगर ये फाइनेंस के लिए अगर ये आ रहे हैं, दीज आर किलर कंपनीज. मेरे ख्याल से वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस. या फाइनेंस राउंड अबाउट 30-40% जनता ने फाइनेंस लिया है. That's a good number. That's a healthy number. Dara Shaw, pretty good company. Credit Suisse, प्रोफाइल भी दिया इन्होंने. बिल्डिंग सिनर्जीज एंड एफिशिएंसी फ्रंट, ये पूरा बैकएंड है. क्रेडिट स्विस पूरा बैकएंड, पुणे का ये पक्का होगा. 7 से 8 लाख की जॉब यहाँ पे मिलेगी. बजाज फिनसर्व, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्रिटी गुड कंपनी, प्रिटी गुड प्रोफाइल. एयरटेल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नॉट दैट ग्रेट. अगेन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ कॉस्ट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, आपके लिए बहुत अच्छा होगा. दारा शॉ, स्टडी ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, गुड प्रोफाइल, एक्चुअली गुड प्रोफाइल. सेम लेवल का प्रोफाइल आता है टियर 2 कॉलेजेस में. EY is giving analysis of global financial services industry mandates. ठीक है, kind of a copy paste. FinIQ is by the way a big player, guys. You need to keep this in mind. FinIQ is actually visiting IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta. FinIQ goes on all the top-notch colleges. अगर मैं IIM Ahmedabad की बात करूँ predominantly, so FinIQ is a major recruiter in IIM Ahmedabad. And they have a pretty good profile. So price setting, testing, what if analysis, the profile is pretty good. GEP Solutions Private Limited, no, really much information about this. HDFC Bank, HSBC, ICICI, Indian Oil Corporation, Indian Rating and Research, ITC, OYO, PNB, MetLife. I think the companies are good as far as the summers are concerned. Let's have a look at your HR. That's 42 bachelor in HR out of 306. That's round about, again, when I talk about this, that's round about, again, like, close to 10 to 15% people have opted for these things. Moving ahead, again, if you look at the companies, Google, yeah. So this is one of the point of attraction as far as SIMS is concerned, that Google comes on campus for all this equity and inclusion in staffing and employer branding and all that. ये थोड़े बड़े high funda words है, but Google में जाना बहुत बड़ी बात है यार, आपको ये मिल सकता है. Now, the point is that कि सर ये regular recruiter है कि guest recruiter है. रेगुलर का मतलब होता है हर साल कंपनी या कॉलेज के कैंपस पे आती है, दे मेंटेन द रिलेशनशिप. गेस्ट का मतलब होता है 5-6 साल पहले आई थी, अभी आना बंद कर दिया है. बट आई थिंक गूगल इज अ रेगुलर रिक्रूटर ऑन SIMS. भारत फोर्स, डेलॉइट, these are pretty good companies. So company wise it looks good. Mindtree is again one of the good company. Morgan is coming on the campus. Pepsico India is coming on the campus. I think these are the good companies that you can think about as far as the recruitment is concerned. Let's move ahead. What do we have? We've got marketing now. Marketing also, I think we should be having 139 students in marketing. Maximum chunk अगर आप देखोगे तो 50% batch is from marketing वैसे देखा जाए तो. Bajaj Finserv, Bata, Ernst & Young, Future, GEP, GoDigit, Geo Studio, Lakme. I think the recruiter profile is not that bad. Sodexo is by the way Fortune 500 company in the world. Keep that in mind. So Sodexo also has good profile. They give you a facility management by the way, and this is pretty much B2B, guys. Sodexo जब देता है, Sodexo is there on Narsimhanji also. Sodexo comes on Jamnalal Bajaj sometimes. Sodexo comes on all the elite colleges. You might be surprised कि सर SIMS का तो रैंकिंग इतना है नहीं, तो फिर भी इतनी बड़ी कंपनीज क्यों आती है? भाई मेरे नेटवर्क, द ब्रांड कॉल्ड एज सिम्बाइसिस. सिम्बाइसिस का अपना अलग चार्म है. मैं पहले से कहता हूँ सिम्बी ब्रांड, यू कांट रियली बीट दैट, एंड दैट्स हाउ यू गेट सरप्राइज व्हेन यू आर इन द सिम्बाइसिस का ब्रांड. सो सिम्बी विल ऑलवेज सरप्राइज यू, मैन. Sodexo, Fortune 500 company in the world, B2B profile, business to business tie-ups, amazing profile.
ऑप्स के बारे में बात करेंगे. ओके, व्हाट डू वी हैव? जीईपी अगेन आएगा ऑप्स के लिए. मारुति सुजुकी, देयर आर गुड कंपनीज फॉर ऑपरेशंस आल्सो. स्टार प्लेसमेंट, अभी अब बात करेंगे प्लेसमेंट की. अगर आप देखेंगे समर के बारे में और फाइनल के बारे में, तो यार ज्यादा चेंजेस नहीं होता है. मोस्टली समर अगर मिलता है आपको तो आपको पीपीओ भी आ जाता है. मोस्टली कंपनीज रिपीट होती है. अगर हम स्टार प्लेसमेंट देखेंगे सो गूगल में, तो मेरे कहा था गूगल में आपको प्लेसमेंट है. एयरटेल पेमेंट्स बैंक, माइकल पेज इज अगेन अ कंपनी विच इज इनटू द एचआर डोमेन. इट्स काइंड ऑफ अ डिसेंट कंपनी यू कैन थिंक ऑफ. मैक्सिमम पैकेज के बारे में अगर हम, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ स्टार रिक्रूटर्स आउट हियर बाय द वे. सो विप्रो, डेलॉयट, ईएनवाई. इस साल थोड़ा सा हिकअप मिल सकता है. इस साल ये नंबर थोड़े कम जा सकते हैं. मे बी मिनिमम पैकेज कैन गो अराउंड अबाउट 6 लाख. एवरेज इज 9 लाख विच इज ओके. हाईएस्ट इज अराउंड अबाउट 16 लाख विच इज डिसेंट. See guys, I am not really a good fan of, I really don't want to have a look at all these things, because the point is that when you join a B school, these numbers are up to you, man. You can actually change these numbers, to be very honest. The only thing that I'm looking at this. I want to check the opportunity that a B school is giving me. As simple as that. I don't really want to get into कि यार कितना पैसा देगा and all that. See, if you have a good opportunity, do you really think that these companies can pay you peanuts? No ways, man. No ways. These guys these are the big bulls in the market, right? So agar dekha jaye, these are big companies in the market, man. These are Fortune 500 companies in the world, right? Or Fortune 1000 companies in the world for sure, right? So they're not going to give you peanuts. They're definitely going to give you a good amount of money. Maybe तुम्हारा start कम होगा. अगर Google SPGN में round about 16-17 लाख देगा, तो SIMS पे 5-5.5 लाख देगा. But बेटा, getting into Google is itself a big thing. You getting my point? अगर मैं ये नंबर देख रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ज्यादा बात नहीं करता रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे. मुझे वो बड़ी स्टुपिडिटी लगती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे. तुम्हारा करियर 30-35 साल चलता है, 20-25 साल तो चलता ही चलता है. तो बेटा, यू गोना मेक मनी, राइट? बिकॉज ये जो आपका 20 लाख या 15 लाख 16 लाख जो भी आपका है, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है यार. एक बार आपने वो भर दिया, 2 साल के बाद आपको पैकेज मिल गई गूगल में, अगर आप लग गए, यार 15-20 साल के बाद यू गोना मेक मोर देन करोड़ यार, अगर आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करें तो, राइट? सो मेरे ख्याल से ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है. पेशेंस कैन पे डेफिनेटली. ये थोड़ा सा इनका डिटेल यहाँ पे दिया है इन लोगों ने, जहाँ पे क्लास 10-12 के बारे में लोग बात करें. सो आई थिंक ओवरऑल कॉलेज लुक्स डिसेंट. मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेट कॉलेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट यार सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे हो, यू आर टाइप ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पे आपको लगता है कि सर मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा कुछ तोड़फोड़ कर पाऊंगा लाइफ में. मेरे ख्याल से मुझे SIMS भी चलेगा, बिकॉज मेरा स्नैप में इतना अच्छा नहीं आया इधर से, मतलब समथिंग लाइक दैट, राइट? अगर आपको ऐसा लगता है तो, राइट? अच्छा, ये NBA 2020 का इन्होंने दिया है. बेसिकली ये जो NBA 2020 का रिपोर्ट है, इसका मतलब है 18 से 20 वाली बैच, राइट? अगर हम 19 का भी देखते हैं, आई थिंक वी शुड हैव अ 19 का रिपोर्ट ऑल्सो. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट टू इट. सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि गाइस, थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखोगे तो आप, आई थिंक योर लाइफ विल बी सॉर्टेड. लाइफ प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी चेंज हो गए यहाँ पे. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द प्लेसमेंट थिंग. मेरे ख्याल से सेम 308 बच्चे थे. 2-3 ईयर का अगर हम करेंगे क्विक एनालिसिस, तो मेरे ख्याल से वो बेटर होगा. मैंने कहा था ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता, राइट? अगर हम बात करेंगे, क्रेडिट स्विस इज देयर, EY इज देयर, FinIQ इज देयर. सो दीज आर ऑल रेगुलर रिक्रूटर्स गाइस. इसका मुझे एक बार ही, लेट मी हैव अ लुक एट स्नैपशॉट. बट ये 19 का है मेरे ख्याल से, 17, 18, 19, ठीक है, नॉट दैट अ प्रॉब्लम. मेरे ख्याल से वी हैव डन द एनालिसिस फॉर 2020, ठीक है. सो दैट्स अ गुड इनफ. सो डिसेंट कॉलेज है. अगर हम बात करेंगे कि सर इसके चलते क्या लेना चाहिए, चलो फटाफट कंपैरिजन कर लेते हैं. SIMS वर्सेस वेलिंकर. मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो वेलिंकर चलना नहीं अच्छा होगा. SIMS जा सकते हैं. मार्केटिंग के लिए डेफिनेटली वेलिंकर. दालमिया वर्सेस SIMS. दालमिया फॉर फाइनेंस डेफिनेटली, एंड मार्केटिंग ऑल्सो. बात करेंगे रिजवी, ठाकुर, whatever that Kohinoor and all that colleges out there in Mumbai, Alkesh Modi, मेरे ख्याल से SIMS is pretty good. Christ versus SIMS, you can go for SIMS, not a problem. Again, there are a lot of B schools in the country. IFMR versus SIMS, डेफिनेटली IFMR आप जा सकते हो. एंड बाकी जितने भी जिम है, टैपमी है, तुम्हारा जो भी कॉलेजेस है, मेरे ख्याल से SIMS इज अ गुड थिंग. हाँ, तो ओनली ड्रॉबैक जो मुझे लगता है, पैसा ज्यादा है, पर यार इफ यू रियली वर्क हार्ड, अगर 300 बच्चे हैं, इफ यू आर इन द टॉप 5% और टॉप 10% का कैटेगरी, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा लाइफ सेट है. बिकॉज 16 लाख अगर उनका टॉप है और एवरेज अगर 9 लाख है, तो इसका मतलब यार ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको 11, 12, 13, 14, 15 लाख की सैलरी मिली ही होगी शॉर्ट. सो अंदर जाके मेहनत करेगा तो यू विल बी इन दैट बैंड, यू विल बी इन दैट ब्रैकेट, एंड देन यू विल से दैट कि ठीक है, आई थिंक आई गॉट अ गुड प्लेसमेंट. तो मेरे ख्याल से SIMS फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लुक्स गुड. अनदर ड्रॉबैक मुझे लगता है कि यार मेरे ख्याल से तो 80% डिफेंस के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है. ओपन वालों के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बिकॉज 20% मिलता है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 300 इज अ डिसेंट नंबर.
It's not that ज़्यादा, not that कम. I think it's a decent number. दालमिया में मेरे ख्याल से इतने हैं, इससे भी कम होंगे. But I think overall college looks decent. You can go for it. जो भी मैंने comparison करा आप कर सकते हो. Again, if you really want to like snap होने के बाद, result आने के बाद, GDP होने के बाद, final merit list जब आएगा, you can always reach out to CDC mentors and you can speak to us and give us the list of colleges that you have converted, and then we will help you to do the final selection. So guys, I hope you liked the video and I hope you liked the initiative of mine. Please comment karna whether should I kind of continue with this series or not. So kindly give me feedback. So guys, that's it from my side. If not subscribed to the channel, kindly subscribe because I will be decoding every single college for you. And please do give me some recommendation which is going to be the next Bschool that you want me to review. Guys, that's it from my side. Thank you so very much. Bye bye.